Hello students, I will tell you aims and objectives of plant taxonomy. What are the aims and objective of plant taxonomy? One important aim of systematic botany or plant taxonomy is to prepare a scheme of classification of plants and that provides phenetic, natural or phylogenetic relationship among them. Second objective is aim is that is it has to establish a proper method of identification, nomenclature and description of plant taxa. What are the important aids for identification and nomenclature of plants? First of all, properly identified, described and arranged herbaria specimens in different herbaria. Keys for identification also help. Computer aided identification keys and International Code of Botanical Nomenclature. These are the aids which help in identification and nomenclature. Third important objective of plant taxonomy is to reconstruct the evolutionary history of the plant kingdom. In phylogenetic classification, the plants are arranged in such a way as to give the idea about the sequence of their evolution from simpler, earlier and more primitive type to more complex, more recent and more advanced type. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस ही यही है कि हम देखते हैं कि बिल्कुल सिंपल या प्रिमिटिव फैमिलीज़ होती हैं या प्रिमिटिव टाइप से मोर कम्प्लेक्स और मोर रिसेंट एंड मोर एडवांस टाइप में क्या चेंजेस होती हैं. प्लांट टैक्सोनॉमी आल्सो प्रोवाइड्स वैल्यूएबल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन regarding distribution, habitat, economic value and different characteristic features of the plants and plant groups, and it provides knowledge to the investigators which are in other field of biology. किसी और फील्ड के ने अगर बायोटेक्नोलॉजी में ही है जिसको प्लांट तुलसी पे अगर काम करना है तो पहले उसको तुलसी के बारे की सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो प्लांट टैक्सोनॉमी ही देगा. टैक्सोनॉमिक स्टडी से ही मालूम होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, हैबिट कहाँ है, हैबिटेट कैसा है, दिखने में कैसा है, इकोनॉमिक वैल्यू क्या है. सो दिस विल हेल्प टू for the study of scientific investigators which are in other field of biology. Plant taxonomy gives training to the students of plant sciences regarding collection and preservation of species, use of identification keys, use of manuals and monographs, and to understand the diversity of organisms and their relationship with other branches of biological. Next important objective of taxonomy is that it provides significant valuable information concerning endangered species, genetic variations and ecological diversity. Endangered species के बारे में जब हमें नॉलेज होगी तो हमें पता होगा तो we will try to save that species. वेरिएशंस कहाँ हो रही है और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स कि इकोलॉजिकली कहाँ कहाँ स्पेसिफिक प्लांट हमें मिल सकता है. एंड दिस विल बी ए इम्पॉर्टेंट टूल एंड दिस विल हेल्प फॉर द स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, विल प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट टूल टू द scientists and students, and it will also create interest in the study of nature. Thank you.